So if we summarize yesterday's lecture, what did we talk about yesterday? We first had some discussed some numerical examples for state variable analysis, है ना? Some numerical examples of state space modeling of circuits. एक ही ली थी ना? Was discussed, है ना? And then we also talked about the relationship between state space modeling and transfer function. सही है? अच्छा, इसमें हमने देखा कि अगर हमें एक स्टेट स्पेस मॉडल दिया हुआ है x डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, है ना, वेयर इन द इनिशियल कंडीशंस आर डिफाइंड एज x ऑफ t नॉट इज डिफाइंड एज x ऑफ नॉट, है ना. तो पहले जो हमें जनरल एक्सप्रेशन मिली जिसमें हमने इनिशियल कंडीशंस भी ली थी, सो दैट वाज वाई एस इज इक्वल टू सी एस आई माइनस ए इनवर्स एक्स नॉट, है ना, प्लस सी एस आई माइनस ए इनवर्स ऑफ बी प्लस डी इंटू यू एस, है ना. तो इसमें आप देख सकते हो कि आउटपुट जो है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज दिस एंड सेकेंड इज दिस. यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, लीनियर सिस्टम्स, और लीनियर सिस्टम्स के लिए आपको पता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम होल्ड करती है. सो बेसिकली द इनिशियल कंडीशंस कैन आल्सो बी थॉट ऑफ एज एन इनपुट दैट्स अप्लाइड टू द सिस्टम, isn't it? So the output of the system is actually the algebraic sum of the output due to initial conditions and output due to input, due to the applied input, isn't it? Now while defining the transfer function, we assume the initial conditions to be 0. So that's why we got the transfer function as, we obtained g of s is equal to, this one is ys upon us, है ना, with x naught equal to 0, isn't it? That's equal to c, पहले लिखेंगे ऐसे ही, एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी. सही है. आप बाद में देखोगे कि ये जो डी वाला टर्म इसमें आता है, डी वाला टर्म आता है एक्चुअली बिकॉज ऑफ यू नो ट्रांसफर फंक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स. यू हैव गॉट ए प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, improper transfer function and strictly proper transfer function. Improper transfer function is one wherein the number of zeros is greater than the number of poles. That transfer function is not physically realizable. You cannot realize that transfer function physically. Strictly proper and improper transfer functions can be realized, isn't it? Proper transfer function जो होती है उसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर होती है, ठीक है ना. और स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन में न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री लेस देन डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है. आप देखोगे कि जो ट्रांसफर फंक्शंस जिनमें नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स, दिस डी टर्म विल अपीयर. ये हम देखेंगे बाद में. दिस डी टर्म विल कम देयर. Whereas for the transfer functions wherein the number of zeros is strictly less than the number of poles, you will find that this term will not be there. This term will not be there. And you will find that in control systems, you normally have a transfer function wherein the number of zeros is less than the number of poles. Although a transfer function wherein the number of zeros is equal to the number of poles can also be physically realized, but you usually go for those transfer functions in control systems, or control systems have got transfer functions wherein the number of zeros is strictly less than the number of poles. There is a reason behind that. The reason is that you know that this d वाली term जो है ना, मैंने जब ये यहाँ पे यूज किया, this is the direct relationship between y and u. इसमें सिस्टम डायनामिक्स नहीं आती है, x नहीं आता है इसमें, इस वाली टर्म में.
ये इनपुट आउटपुट की रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप है विदाउट गोइंग टू द सिस्टम स्टेट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनपुट में कोई नॉइज है दैट विल डायरेक्टली अपीयर इन द आउटपुट। जब हम कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करते हैं तो एक प्रॉपर्टी जो कंट्रोल सिस्टम्स की होती है, डिजायरेबल प्रॉपर्टी, वो ये होती है कि नॉइज या इसमें जो सिस्टम का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि वो कंट्रोल इनपुट या कमांड इनपुट को फॉलो करे और जो डिस्टर्बेंसेस आती हैं उनको सप्रेस करें। A control system has to be designed in such a way that it follows the command input and suppresses the disturbance. I'll give you an example. Like I am teaching in the class. For the students, what I teach is the command input. Whatever is happening outside, that's the disturbance. So when I have a classroom, my intention is that you should follow me and you should be least affected by the disturbances that are happening outside, isn't it? In other words, we say that you should be sensitive to the input that I am providing and insensitive to what is happening outside, isn't it? That is how a control system is designed. Control system is designed in such a way that it rejects the disturbances. Are you getting me? अब ऐसी सिस्टम्स में क्या होता है जिसमें डी टर्म प्रेजेंट होती है, अगर इनपुट में कोई डिस्टर्बेंस है वो आउटपुट में भी आती है। तो ऐसे सिस्टम्स, ऐसी ट्रांसफर फंक्शंस जिनमें कि नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, जो भी हमने देखा नहीं कैसे इसका क्या रिलेशन है उसके साथ, वी आर नॉट सीन दैट एज येट, हम देखेंगे बाद में कि ऐसी ट्रांसफर फंक्शंस जिनमें कि नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, उनके स्टेट स्पेस मॉडल्स में डी जो है वो नॉन जीरो टर्म आती है, जिसकी वजह से ऐसे सिस्टम्स की डिस्टर्बेंस रिजेक्शन पुअर होती है, because there is a direct relationship between the input and the output. Whereas control systems are designed in such a way that you want the disturbances to be rejected, and you will find later on, for the disturbances to be rejected, a control system must have a strictly proper transfer function. A strictly proper transfer function means wherein the degree of the numerator polynomial is strictly less than the degree of the denominator polynomial. And you will find that for the state space models of strictly proper transfer functions, D comes out to be 0. D comes out to be 0. So since D comes out to be 0, there is no direct link between the input and the output. So we will see later on that such systems do have better disturbance rejection property. Do you get me? इसीलिए आप देखोगे मैक्सिमम टेक्स्ट बुक्स में when they define state space models, they don't take this D term, because they take it for granted that we have to design a control system in such a way that D is not there. Are you getting me? But for the sake of generalization, for the sake of developing the general concepts, we will take the complete state space model. Are you getting me? अच्छा, इसमें हमने कल देखा, फिर ये जो C SI minus A inverse of B plus D है, इसमें हमने डेफिनेशन यूज की, इसकी एडजॉइंट की, वो हमने ऐसे लिखा, C of adjoint of SI minus A determinant of SI minus A B plus D, है ना? सही है ना? ये मैं कल का थोड़ा सा आपको समराइज कर रहा हूँ सो दैट वी कैन जस्ट कंटिन्यू विद द टुडेज लेक्चर, ओके? फिर हमने इसको ऐसे लिखा, C adjoint of SI minus A inverse B, सही है, प्लस D determinant of SI minus A upon determinant of SI minus A. नहीं, इनवर्स नहीं है, सॉरी, देयर इज नो इनवर्स हियर, ओके? एडजॉइंट ऑफ SI माइनस A ऐसे लिखा था ना? अच्छा, अगर आप को ये इफ यू रिकॉल, हाउ डू यू ऑब्टेन द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स? You know, once you obtain the adjoint of a matrix, you suppress the row and column corresponding to a particular entry and then evaluate the determinant that remains, जो उसमें बाकी रहता है, फिर है ना, करते हैं ना वैसे ही। तो मान लो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है, तो किसी भी एंट्री को जब आप इवेलुएट करोगे, यू विल एक्चुअली गेट, व्हेन यू विल इवेलुएट दैट, जो उसका डिटरमिनेंट इवेलुएट करोगे वो n-1 ऑर्डर का होगा, isn't it? Means जब ये पॉलिनोमियल आप एक्सपैंड करोगे, it will be a polynomial of degree n-1, whereas this is a polynomial of degree n. Are you getting me? When you add a polynomial of degree n-1 to a polynomial of degree n, you get a polynomial of degree n, isn't it? That polynomial of degree, वो nth वाली टर्म इसकी वजह से आती है, मेरी बात समझ रहे हो आप? इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? n. n और n तभी आएगा जब ये d नॉन जीरो होगी। जब d नॉन जीरो होगी तभी ये डिटरमिनेंट ऑफ SI माइनस A आप न्यूमरेटर में एक्सपैंड करोगे,
that will contribute same degree of the numerator and the denominator. If d is 0, you will get only this, and that will be a polynomial of degree n minus 1. That's what I was saying just now. Are you getting me? Do you get me? So d is equal to d not equal to 0 implies a proper transfer function. Proper transfer function, which is actually, what is that? Degree of numerator polynomial equal to degree of denominator polynomial. Do you get me? And d equal to 0 implies a strictly proper transfer function. सही है? Strictly proper transfer function, wherein the degree of numerator polynomial is strictly less than the degree of denominator polynomial. जरूरी नहीं है कि n-1 ही होगा, उससे कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इस पर, c एंड b पर भी डिपेंड करेगा ना वो, कि कोई एंट्री हो सकता है n-1 वाली एंट्री 0 हो जाए या कुछ ऐसा हो. So in that case, the degree of the numerator polynomial will be strictly less than the degree of the denominator polynomial. इस केस में क्या होगा? Degree of numerator polynomial will be strictly less than the degree of denominator polynomial. Am I clear? Okay. तो ये थोड़ा सा रह गया था कल, जो मैंने ये एक्सप्लेनेशन इसका अभी कल रह गया था. Yesterday I just told you about how you obtain the transfer function corresponding to a given state space model, and I also told you that once we have to obtain the state space model corresponding to a given transfer function, there the problem becomes a bit more complicated, because you can have infinite state space models corresponding to a given system. So which type of state space models we choose, that becomes another question there, isn't it? I'll come to that later on. Is that clear up to now? Now we will talk about something known as similarity transformation. Similarity transformation. Okay. So you have a model x dot equal to ax plus bu, y equal to cx plus du. Okay. And x of t naught, which is x of 0, normally t naught is taken as 0 for linear time invariant system, as I told you yesterday. It's defined like this. So yeah. Now what is a similarity transformation? Do you know, अपने complex variables पता है ना थोड़ा idea? ये x है, ये y है, ये complex number है, a plus iota b, है ना? ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है एक 2-dimensional प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, है ना, जिसमें कि ये x कोऑर्डिनेट इसका a है और y वाला b है, isn't it? अब सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसमें वो उसकी रिप्रेजेंटेशन बनती है r एंगल ऑफ थीटा, ऐसे लिखते हैं ना, या दैट इज r e रेज़ पावर j थीटा और i थीटा, है ना, विच इज एक्चुअली r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा r sin ऑफ थीटा.
तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया इस फॉर्म में. So the same complex number can also be represented by means of a line drawn from the origin to that point ऐसे, and angle that it makes with the positive x-axis, isn't it? ये r है, ये थीटा है. तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो तरीकों से देख सकते हैं, isn't it? एक तो r थीटा कोऑर्डिनेट फॉर्म में, दूसरा xy कोऑर्डिनेट फॉर्म में, and both of these are interchangeable. You can convert from one form to another form, isn't it? Now, last time when I was talking about state space, and I started with a two-dimensional state space. This is x1 and this is x2. कोई भी स्टेट वेक्टर इसमें, या कोई भी स्टेट जो स्टेट वेक्टर का वैल्यू है, that gets represented as a point in the state space, where this is the value of x1 component of that state vector, and this is the value of x2 component of that state vector, isn't it? Now, there can be, as I told you last time, there can be infinite ways of representing this point in the state two-dimensional state space. एक तरीका तो ये दिखाया हमने, जो कि जिसमें कि ये दो एक्सिस हम जो ले रहे हैं ये ऑर्थोगोनल एक्सिस हैं, they are at 90 degree, and it is the best way of representing it. But it is not necessary that you change the state space change the what you call the coordinates of the state space like this. I could even represent it like this. Origin, maybe you put same उसी जगह पे रखो या different जगह, even origin can be displaced. Now I can represent the same vector with respect to these two axes. कम से कम दो एक्सिस मुझे चाहिए, एक एक्सिस से रिप्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि ये टू डायमेंशनल स्टेट स्पेस है. I can call this Z1 and Z2. Are you getting me? तो जब हमने लास्ट टाइम स्टेट मॉडल ऑब्टेन किया सिस्टम का, जो कि हमने इलेक्ट्रिक सर्किट लिया था, तो उसमें हमने ये x1 और x2 ये हमारे पास एक फिजिकल वेरिएबल्स थे. x1 was the current through the inductor, x2 was the voltage across the capacitor. Then when you represent, now you are representing it in you are representing the state in a two-dimensional state space. Now if I do some mathematical transformations and represent the same state, same point using a different set of coordinate axes, I can do that, and its value, its representation in terms of one state, one representation can always be transformed into another representation. That is known as a similarity transformation. What do I call that? Similarity transformation. So similarity transformation gives me a equivalent state model corresponding to a given state model. Are you getting me? State models change नहीं होता, वो same है, मतलब model same है, but I will get a different representation of this system. And how do I define this? How do I define a similarity transformation? I define it like this. I define something like x is equal to pz. You know, x is an n cross 1 vector, isn't it? Z also I define as another n cross 1 vector, and P I define as a matrix n cross n, and the restriction on this P is that it must be invertible. क्या होना चाहिए? Invertible. P is an n cross n invertible matrix, means non-singular matrix. समझ आया? I define P, any P. So let's say you have a 3 cross 3 three-dimensional state space है आपकी. Means x is 3 cross 1 vector. Z is also 3 cross 1 if you take n equal to 3. So P you will define as any, I'll use the word any here, any n cross n invertible matrix. So how many ways can you define any n cross 1 3 cross 3 invertible matrix? जैसे मैं बताऊं कि आप मुझे एक 3 या 2 cross 2 invertible matrix बना के दो. जैसे I write something like 2 4 1 and 3. It's an invertible matrix. 2 3 is 6, 4 1 is 4, 6 minus 4 2, है ना? इसका determinant है ना non-zero. So how many ways can you define in infinite ways? So I can define in infinite ways n cross n invertible matrix, because I have told you define any n cross n invertible matrix.
Once I define this transformation, so what I am basically doing is that my state vector x, I am representing it in terms of another state vector z, which is also of the same dimension as x, wherein, and P is a constant, it is a constant matrix, okay? Constant matrix means it's made up of numerical entries, constant numerical entries. Are you getting me? Like this. Let's say I define something like this: x1, x2 is equal to 1, 3, 2, 4, and I define z1, z2. Or just to avoid the confusion, because my original vector is x and my new vector is z, I define it like this. वो थोड़ा आपके लिए ज़्यादा easy हो जाएगा visualize करना, क्योंकि x मेरे पास already है ना. Otherwise, this is also a way in which you represent. In many books, you will find x equal to pz, and I also most of the times use the same representation. तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर? This will become z1, z2. This will become x1, x2. Are you getting me? So in other words, what I have actually done, I have defined z1 equal to x1 plus 3x2, and z2 I have defined as 2x1 plus 4x2. तो मैंने जो नए स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन किए, they are the linear combination of the original state variables. Are you getting me? Z1 I have defined as x1 plus 3x2, a linear combination. Linear combination क्या होता है? हाँ, that's what it is. So it's a linear. So I have defined the new set of state variables as a linear combination of the original state variables. A new set of state variables has been defined. A new set of state variables has been defined, which is a linear combination of original set of state variables. Do you get me? Huh? Which is a linear combination of the original set of state variables. कल हमने दूसरे मार्कर निकाले थे ना? ये नहीं थे वो. Okay. Now what after that? So I define something like this. So in general, if you have an n cross 1 n-dimensional state space, you will have the matrix defined like this, isn't it? Now I use this transformation here. Shall I rub it here? तो इसके कहने का का मतलब ये है बेसिकली कि जब हमने फिजिकल वेरिएबल्स को एज स्टेट वेरिएबल्स चूज किया, करंट को, वोल्टेज को, तो उन वेरिएबल्स की फिजिकल सिग्निफिकेंस थी. अब मैं जो नया सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन कर रहा हूं, दे आर सिंपल मैथमेटिकल वेरिएबल्स. You cannot every time relate them to the physics, but you can transform them back to the physical variables. I'll show you how. So you should always remember that state variables need not be physical variables always. They can be simple mathematical variables which have no, and it's very difficult to establish their relationship with the original, but they can be transformed. Now once I use this transformation, z is equal to px, so that actually means z dot equal to, p is a constant matrix, px dot, है ना यहाँ पे, or I can write x dot equal to, since p is an invertible matrix, I can write p inverse of z dot. सही है? तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके what will you get? x dot की जगह I write down p inverse of z dot, isn't it? So p inverse of z dot is equal to what? A x की जगह p inverse of z प्लस बी यू ऐसे ही. सही है ना? पहले मैं ये इक्वेशन देख लेता हूं. सो और z डॉट इक्वल टू p inverse on this side will become p
पी ए पी इनवर्स पी ए पी इनवर्स जेड प्लस पी बी यू, सही है। और आई कैन राइट जेड डॉट इक्वल टू, ये ए तो नहीं है, ए डैश इसको बोलेंगे, पी ए पी इनवर्स। How will it be identity? We can interchange. What? So P A P dot. So we can write it as sir P into P inverse. फिर हम लिखेंगे A. P into P inverse. You will write down P into P inverse. Yes, then? So then we will write A dot. Where will you get this P inverse from? So we have a sir. P inverse तो यहाँ पे है. So हम interchange कर सकते हैं क्योंकि invertible matrix. कौन सा? सर P inverse हमारी invertible matrix है ना. तो? सर इसका हम multiplication कर सकते हैं सर उसके. किसके साथ? सर P ए पी इनवर्स को पी इनवर्स ए हम कैसे लिख सकते हो? मैट्रिक्स प्रोडक्ट थोड़ी कम्यूटेटिव होता है। In any case, matrix product is not commutative. You will actually get this P. Actually, what's the size of this matrix P? N cross N. What is the size of A? N cross N. What is the size of P inverse? N cross N. So it will be another N cross N matrix, which we will call as A dash. It will not be equal to A. So this is Z dot equal to AZ plus size of A is what? N cross N. Size of B is N cross 1. So you get another N cross 1 matrix, which we'll call as B dash U. So Z dot equal to A dash Z plus B dash, where A dash is equal to P A P inverse. So yeah, and B dash equal to PB. समझ आया? Same way in this equation also, y is equal to C. What is x equal to? P inverse Z. X is P inverse of Z plus D U में तो एंटर नहीं होगा ये, है ना? और y is equal to C P inverse. C is what? What is the size of C? It's 1 cross n. What is the size of P inverse? Is n cross n. So this is n cross n, 1 cross n एक और मैट्रिक्स मिलेगा, which I call as C dash. C dash Z plus DU. सही है? तो मुझे एक और स्टेट मॉडल मिला, Z dot equal to A dash Z plus B dash U, Y is equal to C dash Z plus DU. So means जब मैंने ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की, Z is equal to Px, I define a new set of state variables and I get another state model. What is that state model? Z dot equal to A dash Z plus B dash U, Y is equal to C dash Z plus DU. Okay, where ये मैंने एक बार लिखा है यहाँ पे, A dash is equal to P A P inverse, सही है? B dash is equal to P B and C dash is equal to C P inverse. D सेम दोनों में, सही है ना? मैट्रिक्स लिटरेचर में A डैश और ये A वाला मैट्रिक्स जो है, इनको सिमिलर मैट्रिसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम देखेंगे। A dash and A are known as, that means if you define, if you have a matrix A and if you take any n cross n invertible matrix and you obtain another matrix PAP inverse, you get another matrix A dash, then this A and A dash are said to be similar matrices. We call them as, and this transformation is known as similarity transformation. What do we call this? So what is similarity transformation? It is Z is equal to Px. This is a similarity transformation. Do you get me? Now, given a state space model, you can define the similarity transformation matrix in infinite ways. So you can get infinite state space models corresponding to a given state space model, isn't it? अब इस similarity transformation करने का purpose क्या है? Purpose ये है कि जब जो मुझे original state space model है, मुझे अगर वो किसी predefined form में चाहिए, I want, let's say जैसे मैंने कल example दी थी, I want this A to be in diagonal form. That means I want to define similarity transformation matrix transformation in such a way
that once I do the similarity transformation, this matrix A dash turns out to be a diagonal matrix. Turns out to be a diagonal matrix. Then the problem remains how to choose. That will depend upon how you choose P.